Good evening, everyone. We are very happy and excited to show you our New Zealand product and our destination, New Zealand. As you have already seen the video, New Zealand is all about its scenic beauty and adventures. So I would like to show you one presentation, which is a which is I very happy and excited to show you our new. So New Zealand have many different flights from Ahmedabad, Mumbai, Delhi, Bangalore. So we'll discuss it later when we'll end the presentation. You can ask me questions about your flights, depend on where you're based. New Zealand. So I'll speak in Hindi so we all can understand. So New Zealand is considered as the youngest country in the world. You will be shocked to know that न्यूजीलैंड में जो ह्यूमन पॉपुलेशन आई इट वाज द लास्ट ह्यूमन पॉपुलेशन जो यूरोपियंस न्यूजीलैंड में आए और जो ह्यूमन सेटलमेंट हुआ सो दैट इज व्हाई दे कंसिडर न्यूजीलैंड एज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वेरी प्योर वेरी ऑर्गेनिक जो एटमॉस्फेयर है जो उस वहाँ की जो आबो हवा है वो इतनी ज़्यादा प्योर है कि ऐसा बोला जाता है कि इफ़ यू लिव इन न्यूजीलैंड फॉर 6 मंथ्स आपकी 2 साल उम्र बढ़ जाती है सो दैट्स व्हाट वी सी व्हेन वी गो टू न्यूजीलैंड Kiaora. So Kiaora is in local Maori language. What they mean is welcome to New Zealand. So whenever you go to New Zealand, the local people will say Kia ora. We'll go by the facts of New Zealand. Capital city of New Zealand is Wellington. और न्यूजीलैंड में there are major cities like Auckland, Rotorua, Christchurch and Queenstown. Normally हम जितनी भी itineraries करते हैं we cover these places. न्यूजीलैंड की जो population है it is around 5 million you can consider, so 50 lakh. Local language, people speak in English only over there. Currency is New Zealand dollars. Right now you can consider as 52 rupees. Best time to visit, yes, that is very important. अभी तो न्यूजीलैंड राउंड द ईयर जैसा ही लोग ट्रैवल करते हैं बिकॉज सम पीपल वांट टू गो देयर इन समर, some people want to see the snow, so it's around the year destination. So they have a reverse season there because New Zealand is in southern hemisphere. So इंडिया से हमसे उनकी जो सीजन है वो उल्टी है. सो जब हमारे यहाँ विंटर है तो दे आर हैविंग समर राइट नाउ इन फेब्रुअरी. अभी उनका समर चल रहा है. सो समर विल बी देयर टिल मार्च, देन अप्रैल में would be their autumn season, and after that from June they will have a winter, and September, October they will have spring, and again it will be like okay, from November they will have summer. Time difference, they are ahead of India, so they are 6.5 hours ahead of India. So ये अभी का टेम्परेचर चार्ट है बिकॉज वहाँ पे समर है, सो यू विल हैव वेरी प्लेजेंट temperature over there, which will be like maximum 24 or 25 degrees and lowest would be 7 degrees. So basically New Zealand mein there are two islands. One is North Island and one is South Island. So which you can see here, ऊपर वाला जो पोर्शन है इट इज नॉर्थ आइलैंड. वहाँ पे
the main cities which we visit is Auckland and Rotorua. And South Island जो है नीचे वाला, वहां पे there are 3-4 places which we visit, which is Christchurch, Twizel, Wanaka, and Queenstown. So ये basically, if you are traveling in the group, so normal itinerary ये होती है. In North Island में you are visiting these 2 places, and South Island में you are going to visit 3 or 4 cities. So Auckland we use for our flights. So basically Auckland जो है वहाँ का biggest city है. वहाँ का commercial capital you can say is Auckland. तो मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स जो आप लेते हैं, आप इधर मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद कहीं से भी लेंगे, तो बेस्ट कनेक्शन वुड बी आप ऑकलैंड लैंड करें, और फर्स्ट यू विल डू नॉर्थ आइलैंड. आफ्टर दैट यू कैन टेक अ फ्लाइट फ्रॉम ऑकलैंड टू क्वींसटाउन or Christchurch, and you can visit South Island. If you are going back to India from South Island, so Christchurch को last रखना would be a best idea, क्योंकि Christchurch से you will get your connectivity to your home city. So day one, we arrive in Auckland, and this is Auckland Harbourfront. If you are visiting Auckland on weekends, if it is Friday, Saturday, Sunday, so ये बहुत अच्छी जगह है. You can come here in the evening and you can spend some quality time here. They have so many restaurants and pubs and bars here. Multi-cuisine restaurants है यहाँ पे. So you can come here and it will be open till 12 o'clock. This is Auckland Sky City. So Auckland Sky City is the hotel जो Sky City Casino के ऊपर है, which we use in our group series also. और ये एकदम सेंटर में. Another property is Sudima. Sudima वहाँ की local chain है. Then Coptham Hotel and Holiday Inn Express. So these are the properties which we normally suggest or we use in our tours. Second day आप लोग वहाँ से रोटोरुआ जाते हैं. So the traveling would be by road, or on the way you will be visiting Waitomo Globum Caves. So Waitomo Globum Caves जो है वो बहुत ही यूनिक फिनोमिना है. केव्स तो आप लोगों ने बहुत सारी जगह पे विजिट की होगी. साउथ अफ्रीका है, मलेशिया है, लाइमस्टोन केव्स बहुत सारी जगह पे हैं. बट दिस केव, यहाँ पे ग्लो वॉर्म्स है जिनको हम हिंदी में जुगनू बोलते हैं. सो दे हैव अ केव फुल ऑफ ग्लो वॉर्म्स. और टू विजिट दिस केव, फर्स्ट आपको केव में एंटर होना पड़ेगा, एंड इट विल बी अ गाइडेड टूर. सो दे हैव अ लोकल गाइड हु विल एक्सप्लेन द केव, हाउ दे फाउंड इट, how big is it is, and how old it is. Okay, then they will show you the stalagmite and stalactite. They will explain you. और ये सब होने के बाद then वो लोग आपको ले जाएंगे in the boat. So जहाँ पे ये glowworm caves है, जहाँ पे where you are going to see the glowworms, आपको वहाँ पे बोट में जाना है. So it will be a 10 to 15 minutes ride in the boat. और pitch black dark होता है inside, so you'll be able to see all the glowworms. And when you will see the ceiling of the cave, आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरा यूनिवर्स देख रहे हैं, आप एक साथ million of stars देख रहे हैं. Very unique and beautiful phenomena they have. And then we go to Rotorua for an overnight stay. So the property we use is Sudima Lake Rotorua, Holiday Inn Rotorua, and Regis Rotorua. These are the options in Rotorua which we use. Then next day we go to for Agrodome Ship Show. So आपको जान के बहुत शॉकिंग लगेगा कि 5 मिलियन की पॉपुलेशन में 50 लाख की जो पॉपुलेशन है उनके बीच में यहाँ पे almost 4 करोड़ ships हैं. So ship farming is a very big business here in New Zealand. So lots of people are into ship business. और जो न्यूजीलैंड का wool है, it is one of the expensive wools. So
इफ यू सी, ये जो सेंटर में है, दिस इज द ब्रीड मैरिनो। कि मैरिनो का जो वुल होता है, इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट एक्सपेंसिव वुल इन द वर्ल्ड। सो दे विल शो यू हाउ मेनी टाइप ऑफ शिप्स दे हैव। और वो लोग ने बहुत ही यूनिक शो बनाया है अबाउट द शिप्स। वो लोग आपको शिप शेयरिंग करके बताते हैं, आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, थोड़ा फनी बनाते हैं शो को। दे हैव डॉग्स हु टेक्स केयर ऑफ दिस शिप्स, उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एंड दे हैव स्मॉल शिप्स ऑल्सो। सो अगर वहाँ पे शो में कोई बच्चे हैं, दे दे टेक देम ऑन द स्टेज और उनको फीडिंग के लिए ले जाते हैं। बहुत इंटरेक्टिव शो है, बहुत इंटरेस्टिंग शो है और यूनिक शो है। और after the show they take you to the farm tour. So they will give you the material जिससे आप फीड कर सकते हैं एनिमल्स को। और they have shapes, they have kind of llamas, animals हैं उनके पास, they have deers. So ये सारे एनिमल्स वहाँ पे होते हैं, you can take pictures with them, you can feed them। और ये पूरा टूर जो है ये अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर का होता है। आफ्टर दैट we are going to visit तेपुया थर्मल रिजर्व। सो रोटोरुआ जो जगह है वो बहुत फेमस है थर्मल गीजर्स के लिए और हॉट स्प्रिंग्स के लिए। ओके, सो दे हैव अ सेपरेट प्लेस कॉल्ड तेपुया। तेपुया इज अ माओरी नेम। माओरी देयर एबोरिजिनल्स, वहाँ के आदिवासी जो हैं उनको माओरी बोला जाता है। सो बहुत सारी जगह का नाम उनकी लैंग्वेज में है। सो तेपुया इज इन माओरी। सो यहाँ पे बहुत बड़ा गीजर है, हॉट हॉट वाटर थर्मल गीजर, और विच वी आर विजिटिंग हियर। और ये जगह पे एक चीज बहुत अच्छी होती है कि यू विल बी एबल टू सी कीवी। कीवी नॉट एज द फ्रूट बट कीवी बर्ड। सो कीवी बर्ड जो है, इट्स अ नॉक्टर्नल बर्ड। वो रात को जागता है और दिन में सो जाता है। सो उन लोगों ने एक एनक्लोजर बनाया हुआ है जहाँ पे यू विल बी एबल टू सी कीवीज। नॉट इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन सी कीवीज, बट हियर यू कैन सी कीवीज। और ये वहाँ पे हॉट मड पूल्स हैं। एंड आफ्टर दैट दे हैव अ कीवी फार्म ऑल्सो। सो अगर सीजन है उस टाइम कीवी का और कीवीज हैं, सो दे विल बी टेकिंग यू टू द फार्म और वहाँ पे आप फ्रूट पिकिंग भी कर सकते हैं। देन अगेन वी कम बैक टू ऑकलैंड। और व्हेन वी कम बैक टू ऑकलैंड तब हम ऑकलैंड सिटी देखेंगे। सो वेरी ब्यूटीफुल सिटी। वहाँ पे हम लोग वॉर मेमोरियल म्यूजियम देखेंगे, माइकल सेवेज मेमोरियल पार्क देखेंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, इट्स ऑन द हिल। सो ये पार्क जो है ये एक हिल पे है, और जो सामने आपको दिख रहा है इट इज मिशन बे बीच। सो व्हेन यू गेट डाउन फ्रॉम द हिल यू कैन स्पेंड सम टाइम ऑन मिशन बे बीच एंड ऑकलैंड टावर। So Auckland Tower को हम we are going to visit from the inside. The top floor is around 222 meters. और when you go inside the Auckland Tower, आप यहाँ से टावर जंप भी कर सकते हैं, which is of course optional activity. So if you are adventurous और आपको बहुत अच्छा लगता है adrenaline activities, you can opt for tower jump from Auckland Sky Tower. Then day 5 हम लोग फ्लाइट लेके वी आर गोइंग टू फ्लाई टू साउथ आइलैंड। सो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि न्यूजीलैंड हैव 2 आइलैंड्स। सो नॉर्थ आइलैंड से हम लोग फिर फ्लाई करके वी आर गोइंग टू गो टू साउथ आइलैंड, और वहाँ पे हम लोग जाएंगे टू क्वींसटाउन। सो क्वींसटाउन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन ऑफ न्यूजीलैंड। ये ऑन द लेक है, लेक वाकाटीपू पे है। वेरी ब्यूटीफुल टाउन, जहाँ पे हम लोग होटल यूज करते हैं, हॉलीडे इन एक्सप्रेस एंड स्वीट्स, हॉलीडे इन फ्रैंकटन, हॉलीडे इन रिमार्केबल्स। सो क्वींसटाउन को एक दूसरा ये भी कहा जाता है कि ये एडवेंचर एक्टिविटीज का कैपिटल है।
सो अगर आपको बंजी जंपिंग करनी है, आपको स्काई डाइविंग करनी है, आपको कायाकिंग करनी है, आपको लूज राइड करनी है, जो भी एडवेंचर एक्टिविटीज यू आर थिंकिंग टू डू, वो सब आप यहाँ पे क्वींसटाउन में कर सकते हैं। सो वी टेक यू टू कावाराओ बंजी जंपिंग ब्रिज, और ये जो ब्रिज है यहाँ से आप बंजी जंपिंग ले सकते हैं। सो यू विल बी वेरी हैप्पी टू सी के जो ब्रिज जंपिंग है, इट वाज इन्वेंटेड इन न्यूजीलैंड। ओके। सो न्यूजीलैंडर्स जो है, लोकल न्यूजीलैंडर्स, वो लोग दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज। सो बंजी जंपिंग फ्रॉम द ब्रिज दे स्टार्टेड इन न्यूजीलैंड। और ये जो कावाराओ ब्रिज है, ये बहुत ऊंचा नहीं है, इट्स अराउंड 43 मीटर्स। सो अगर आपको करना भी है और डर भी लगता है, फिर भी आप यहाँ से कर सकते हैं। And another activity which we are going to do is the gondola ride. So क्वींसटाउन को ऊपर से देखने के लिए, द ब्यूटीफुल टाउन, वो हम लोग बॉब्स पीक से देख सकते हैं। सो बॉब्स पीक पे जाने के लिए वी हैव टू टेक दिस गोंडोला राइड। ओके। और जब हम ये गोंडोला राइड लेते हैं, सो विल बी ऑन द बॉब्स पीक, और वहां से हम पूरा क्वींसटाउन देख सकते हैं। अनदर एक्टिविटी विच वी आर गोइंग टू डू इज लूज राइड। सो लूज राइड जो है, दिस दिस व्हीकल इज कॉल्ड लूज राइड। इट वाज इन्वेंटेड इन न्यूजीलैंड। सो हिल के ऊपर इन द माउंटेन वी आर गोइंग टू डू दिस लूज राइड। दिस इज द ब्यूटीफुल लेक वाकाटीपू। सो वाकाटीपू जो है, ये इट इज अराउंड 80 किलोमीटर्स लॉन्ग। सो क्वींसटाउन से भी बहुत आगे तक ये लेक है। यहाँ पे यू कैन डू जेट बोट राइड, कायाकिंग, और यू कैन स्पेंड सम टाइम हियर। दे हैव लॉट्स ऑफ कॉफी शॉप्स एंड बार्स ऑन द लेक। Another town near to Queenstown is Arrowtown. So Arrowtown जो है, यहाँ पे देर वॉज अ टाइम जब यहाँ पे गोल्ड डिस्कवर हुआ था। सो न्यूजीलैंड जो है, it was first searched by Abel Tasman in around 1642. So before 1642, no Western human or nobody from the Europe, कोई भी यहाँ पे आया नहीं था। nobody knew that ऐसा कोई country है called न्यूजीलैंड। So he was able to map the North Island, but he couldn't get down at that time. So Abel Tasman couldn't get down from the ship, and the first person जो न्यूजीलैंड आए और he get down from the ship was British explorer James Cook. Okay, so it was in 1700s. So that time यहाँ पे अभी यूरोपियंस कोई आए नहीं थे, सो ओनली माओरी पीपल वेर लिविंग हियर। सो 1800 में जब दे स्टार्टेड सेटलिंग यूरोपियंस, 1800 में दे डिस्कवर्ड गोल्ड इन एरो रिवर। और जैसे ही उनको पता चला कि यहाँ पे सोना मिला है, तो मैनी यूरोपियंस इन द शिप्स केम टू न्यूजीलैंड, और दे सेटल्ड हियर इन एरो टाउन। सो एरो टाउन में वो लोग यहाँ पे रिवर के पास में दे बिल्ट दिस स्मॉल टाउन, और यहाँ पे गोल्ड निकालते थे। बट आफ्टर सम टाइम गोल्ड निकलना बंद हो गया। सो वो लोग टाउन वैसा ही रख के दे वेंट बैक टू देयर होम कंट्रीज। सो ये हिस्टोरिकल टाउन है। सो यहाँ पे अब गोल्ड शॉप्स तो नहीं रही, बट दे हैव मेड सम सुवेनियर शॉप्स एंड अदर थिंग्स इन दिस टाउन। बट इफ समबडी इन केम हियर इन 1800s, तो ये ऐसा ही दिखता था उस टाइम पे। Then another activity which we are doing is jet boat ride. This is the jet boat ride. Okay. So ये स्पीड बोट होती है जिसको वो लोग 360 डिग्री टर्न कर देते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग राइड। दिस इज द एरो रिवर। One optional activity which you can do in Queenstown is skydiving. So skydiving is one of the safest thing to do here in New Zealand. So there are many places जहाँ जहाँ पे आप skydiving कर सकते हैं, many countries, but New Zealand is one of the safest
फॉर द स्काई डाइविंग। और बहुत ब्यूटीफुल सदर्न आल्प्स का व्यू आता है while you skydive. This is the view when you skydive. Okay. Then we take you to the fruit shop. अब न्यूजीलैंड considered as the most organic country जहाँ पे बहुत ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं. So to show you to taste the fruits, we take you to this fruit stall, which is a family-owned fruit stall, Mrs. Jones fruit stall. और यहाँ पे there are so many fruits and you'll be shocked to see they have red kiwi. So आप लोगों ने कीवी खाया होगा जिसको कट करते हैं तो it's green from inside, but they have one breed which is a red kiwi. Then day 7 we go to Milford Sound cruise. Now Milford Sound cruise जो है वो हम लोग जाते हैं फियॉर्ड्स देखने के लिए. So what is a fjord? फियॉर्ड आपने नाम सुना होगा, शायद नहीं भी सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा नॉर्वेजियन फियॉर्ड्स. सो फियॉर्ड्स इज के ये जो आप लोग माउंटेन्स यहाँ पे देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, दिस आर वेरी ह्यूज जाइजेंटिक माउंटेन्स. और ये जो आप लोग पानी देख रहे हैं यहाँ पे, ये कोई लेक नहीं है, ये कोई रिवर नहीं है. सो दिस इज द सी वाटर. तो आप सोचिए कि यहाँ पे आगे सी है और सी के अंदर इतने बड़े बड़े माउंटेन है और इन माउंटेन्स के बीच में ये सी वाटर है. सो जब ऐसा नेचुरल फिनोमेना क्रिएट होता है इट इज कॉल्ड फियॉर्ड. सो ये फियॉर्ड्स देखने के लिए हम लोग जाते हैं और ये यहाँ पे क्रूज होती है विच इज ऑफ 1 आवर. सो ये 1 आवर की क्रूज देखने के लिए हम लोग मिलफर्ड साउंड जाते हैं. और जाने का जो रास्ता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट सीनिक रूट ऑफ न्यूजीलैंड. यू कैन सी इन द स्क्रीन हाउ ब्यूटीफुल इट इज. सो जाते टाइम हम लोग 4 से 5 स्टॉप लेते हैं. यू कैन टेक योर फोटोग्राफ्स, यू कैन मेक सम गुड रील्स ओवर हियर. और देर आर सो मेनी पॉइंट्स. लेक तिएनाव है, वहां पे भी टेक अ स्टॉप. मिरर लेक है, होमर टनल है, मंकी क्रीक, द चाजम, एंड देन वी रीच टू मिलफर्ड साउंड. सो यू सी ये जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ, दिस इज द क्रूज एंड हाउ बिग आर द माउंटेन्स हियर. ओके. सो ये दिस प्लेस इज अनरियल, अनटच्ड. इट्स लाइक व्हेन यू सी इट यू बिलीव इट. और ये क्रूज जो है ये वहाँ पे जो फॉल्स है वहाँ पे ले जाते हैं आपको. दे एक्सप्लेन यू द फॉल्स, द हाइट ऑफ द फॉल. एंड दिस इज हाउ दे टेक यू टू द फॉल. और फॉल के एकदम नजदीक जाके वो लोग खड़े कर देते हैं क्रूज को. और जो सी वाटर है, जहाँ से सी वाटर का इनलेट है, वहां तक ले जाते हैं वेर यू कैन सी द होल सी. और वहां से फिर ये क्रूज टर्न होती है एंड कम बैक. ब्यूटीफुल क्रूज. Then next day we visit Wanaka. So this is Lake Wanaka. बहुत पीसफुल टाउन है वनाका. वहां पे हम लोग जाते हैं लेक वनाका पे. और वी विजिट पजलिंग वर्ल्ड वनाका. सो पजलिंग वर्ल्ड वनाका जो है इट्स अ फन एक्टिविटी प्लेस. फैमिली के साथ जा रहे हैं तो बहुत मजा आता है यहाँ पे क्योंकि ग्रुप एक्टिविटीज होती है. थोड़ा यूनिक आर्किटेक्चर है यहाँ का, फोटो अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है. सो ये दिस इज द मेज जो भूल भुलैया हम बोलते हैं. आप रास्ता ढूंढो और बाहर निकलो. देन दे हैव यूनिक स्ट्रक्चर्स इनसाइड. दे हैव अ रूम, इल्यूजन रूम, जहाँ पे आप दो लोग खड़े होते हैं तो एक इंसान बहुत छोटा दिखता है, एक इंसान बहुत बड़ा दिखता है. दे हैव अ ग्रेविटी रूम जहाँ पे आप कुछ भी कर लो आप सीधे खड़े नहीं हो सकते, एक एंगल पे ही आप खड़े हो सकते हैं. सो इफ यू सी बॉटल सीधी है बट द पिक्चर में ये जो लेडी है उनको एक एंगल पे खड़ा रहना पड़ रहा है. सो यू हैव टू फाइंड आउट कि ऐसा क्यों है वहां पे जाके. दैट इज द फन एक्टिविटी.
देन वी वी गो टू ट्वाइजल. सो ट्वाइजल जो है वो माउंट कुक रीजन में है. एंड माउंट कुक जो है वो वहाँ का टॉलेस्ट माउंटेन है. ओके. सो माउंट कुक के आसपास का जो पूरा रीजन है, दे कॉल इट माउंट कुक रीजन. So when we go to Twizel, we visit Lake Tikapo, one of the most beautiful lake. और this is Mount Cook region. तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे हेलीकॉप्टर राइड कर सकते हैं. सो ये जो हेलीकॉप्टर राइड है वो ऐसा नहीं है कि आपको 10 मिनट घुमा के माउंटेन रेंज बता के और वापस नीचे आ जाता है. दे डू अ स्नो लैंडिंग. सो वो लोग एक्चुअली माउंटेन पे जाके वहां पे हेलीकॉप्टर को लैंड करवाते हैं. और वहां पे दे गिव यू सम टाइम 5 6 7 मिनट्स ऑन द माउंटेन एंड देन दे कम बैक. सो ये जो हेलीकॉप्टर राइड होती है ये विद स्नो लैंडिंग होती है. दिस इज द होटल मैकेंजी जो हम लोग ट्वाइजल में रहते हैं. बहुत ही अच्छा फील है इस जगह का. वेरी प्योर. यू सी द स्काई, द कलर ऑफ द स्काई. देन नेक्स्ट डे वी गो टू क्राइस्ट चर्च. सो क्राइस्ट चर्च जब हम जाते हैं सो वी विजिट एंटार्क्टिक सेंटर. अगर आप मैप देखेंगे तो एंटार्क्टिका इज वेरी नियर टू न्यूजीलैंड. ओके. और एंटार्क्टिक सेंटर जो है ये जगह है टू एक्सप्लेन यू हाउ इज एंटार्क्टिका एंड व्हाट इज एंटार्क्टिका. सो एंटार्क्टिका इज नॉट अ कंट्री. और एंटार्क्टिका पे कोई किसी कंट्री का उस पे कुछ क्लेम नहीं है. सो एंटार्क्टिका जो है इट्स फॉर एवरीवन. और हर कंट्री वहां पे अपने साइंटिफिक एक्सपीडिशन के लिए बेस बना सकती है. सो दे हैव सो मेनी कंट्रीज बेसिस इन एंटार्क्टिका. इंडिया के भी देर आर टू बेसिस. वन इज मैत्री एंड वन इज भारती. तो वी हैव टू बेसिस इन एंटार्क्टिका. और वहाँ पे हम लोग हमारे साइंटिस्ट भेजते रहते हैं और एक्सपीडिशन चलता रहता है वहाँ पे to know more about the earth. So they created this storm room. This is the storm room. और यहाँ पे they give you the jacket and boots and everything you need. और -40 डिग्री टेम्परेचर करते हैं इन द रूम विद द विंड. और आप जब 10 मिनट 15 मिनट में बाहर आते हैं तो देन दे टेल यू दैट दिस इज अ नॉर्मल समर डे ऑफ एंटार्क्टिका. वो जानने के बाद you will be having lots of respect about the people who are working in Antarctica in these conditions, very harsh conditions. और another thing जो हम लोग वहाँ पे करते हैं it is Hagland Drive. So ये जो vehicle है it is called Hagland. और अभी एंटार्क्टिका में एक्सपीडिशन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये व्हीकल यूज होता है. सो पूरा ट्रैक बनाया हुआ है एंटार्क्टिक सेंटर में जहाँ उसमें बिठा के पूरे ट्रैक पे ये राइड करवाते हैं टू जस्ट गिव यू द फील हाउ दे आर एक्सप्लोरिंग एंटार्क्टिका. ओके. देन वेरी ब्यूटीफुल शो अबाउट एंटार्क्टिका 4D शो जो हम लोग वहाँ पे देखते हैं. एंड दे हैव पेंगुइन्स. ओके. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ये जो पेंगुइन्स है ये कोई जू तो है नहीं. सो दे हैव वेरी लिटिल पेंगुइन्स. ओके. सो दीज आर रेस्क्यूड पेंगुइन्स बेसिकली. सो किसी पेंगुइन की आंख नहीं है एक, या किसी पेंगुइन का एक पैर नहीं है, या किसी पेंगुइन का एक हाथ नहीं है. तो जो पेंगुइन वाइल्ड में सरवाइव नहीं कर सकते हैं उनको यहाँ पे रखा जाता है टिल द टाइम दे रिकवर. ओके. सो वहाँ पे हम लोग ये पेंगुइन देखते हैं. होटल वी यूज इज डिस्टिंक्शन क्राइस्ट चर्च एंड सुदीमा क्राइस्ट चर्च. So these are few options which we use in our normal series. Then next day we do a tram ride tour of Christchurch. So Cathedral Square जो है ये वहाँ का main square है. You can see the cathedral here in the center. So that's why it is called Cathedral Square.
और वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल ट्राम चलती है, जो हम लोग वहाँ पे करते हैं ट्राम राइड में। ओल्ड ओल्ड सिटी का ये ट्राम राइड है। एंड देन नेक्स्ट डे वी कैन कम बैक होम। सो ये जो था, ये अभी जो हमने देखा है, दिस इज अवर ग्रुप आइटनरी, ओके, नॉर्मल आइटनरी। सो न्यूजीलैंड इज वेरी फेमस फॉर इंडिविजुअल टूर्स ऑल्सो। सो अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे इंक्लूजन्स मिल जाएंगे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर और सब चीज़ें इंक्लूड आती हैं। बट आप ये डेस्टिनेशन को इंडिविजुअली भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और न्यूजीलैंड जो है वो बहुत फेमस है फॉर सेल्फ ड्राइव। सो फॉर सेल्फ ड्राइव आई वुड लाइक टू शो यू आवर वेबसाइट, जहाँ पे हम लोगों ने सेल्फ ड्राइव ऑप्शंस रखे हुए हैं। So New Zealand is considered as one of the best places for the self drive. ओके, यहाँ पे बिकॉज के पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए ट्रैफिक भी बहुत नहीं है। सो सेल्फ ड्राइव अगर आप ले रहे हो तो इट इज़ वेरी सेफ। और इंडियन लाइसेंस जो है वो यहाँ पे चलता है, सो आपको कुछ अलग से कोई लाइसेंस भी नहीं करवाना है। सो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपको सेल्फ ड्राइव करना है न्यूजीलैंड में, सो इट इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन। और दिस इज अवर वेबसाइट पेज। Okay, these are our group tours, and this is the self drive tour link. Okay, so न्यूजीलैंड बहुत फेमस है फॉर हनीमूनर्स। हनीमूनर्स यूजुअली टेक 15-16 नाइट्स आइटनरी और पूरा सेल्फ ड्राइव पे लेते हैं। और बहुत इजी है यहाँ पे गाड़ी चलाना, और रास्ते भी बहुत खाली हैं, सो इट्स वेरी सेफ ऑल्सो। अगर आप लोग फैमिली हैं और यू वांट टू एक्सप्लोर न्यूजीलैंड ऑन योर ओन, सो वी हैव पुट अप मैनी आइटनरीज रेंजिंग फ्रॉम 9 नाइट्स टू 16 नाइट्स, जहाँ पे आप लोग पूरा नॉर्थ आइलैंड साउथ आइलैंड आप कर सकते हैं बाय सेल्फ ड्राइव। ठीक है। सो ये तो हो गया सेल्फ ड्राइव ऑप्शन। देन देर इज वन मोर ऑप्शन, आप प्राइवेट टूर भी कर सकते हैं। सो वी नॉर्मली रेकमेंड कि अगर आपको प्राइवेट कार वाला टूर करना है तो आप लोग एटलीस्ट एक दो फैमिली साथ में जाओ तो इट इज बेटर। अगर आप लोग 2 लोग हैं 3 लोग हैं तो प्राइवेट का जो ऑप्शन है वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आपको ग्रुप में घूमना अच्छा लगता है, टूर मैनेजर सर्विसेज लेना अच्छा लगता है, अगर आपको ऐसा चाहिए कि नहीं हमको सब कुछ आप करके ही दे, हम बस घूमना चाहते हैं, सो देन देर इज अ ऑप्शन फॉर ग्रुप टूर, जहाँ पे यू डोंट नीड टू टेक एनी हैसल, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड और एवरीथिंग इज वेल मैनेज। आपको बस टूर का प्रोग्राम प्रोग्राम फॉलो करना है हमारे साथ, एंड विल टेक केयर ऑफ यू। सो इन न्यूजीलैंड देर आर 3 ऑप्शंस: ग्रुप टूर, प्राइवेट वैन टूर, और सेल्फ ड्राइव टूर। ये सारी चीजें वी हैव ऑन आवर वेबसाइट flamingotravels.co.in। सो ये तीनों ही चीजें यहाँ पे हैं। इफ यू आर प्लानिंग फॉर न्यूजीलैंड, अगर आप लोग इस अप्रैल मई में इफ यू आर प्लानिंग फॉर न्यूजीलैंड, तो हमारे ग्रुप्स ऑलरेडी हैं, एंड दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रोसेसिंग योर वीजा। सो न्यूजीलैंड के जो वीजा हैं इट टेक्स फ्रॉम 5 days to 35 days। सो आपको वो मार्जिन भी हाथ में लेके चलना पड़ता है कि आने में 5 दिन में भी न्यूजीलैंड के वीजा आ जाते हैं, और मैक्सिमम दे कैन टेक अप टू 35 days फॉर द वीजा। तो दिस इज द राइट टाइम टू प्लान फॉर न्यूजीलैंड। अगर आप लोग मई में प्लान कर रहे हैं या आफ्टर मिड अप्रैल प्लान कर रहे हैं, तो दिस इज द राइट टाइम। ओके। और अगर आप लोगों के किसी के कुछ भी क्वेश्चंस हैं एट द मोमेंट, आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस और क्वेरीज। आप जो क्वेश्चन आंसर का जो टैब है उसमें आप आपके क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं राइट नाउ, सो आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस।
आई एम वेटिंग के अगर आपको किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो मैं आपको उसका आंसर दे सकूं. Okay, so Mr. Narendra Dixit is asking what is the cost of New Zealand visa. So, sir, New Zealand visa is uska jo cost है, it's very tricky. So, how you are applying, they have a different cost for family visa and different cost for a single file. So, you can say that आप एक benchmark ऐसा लेके चल सकते हैं कि if you are traveling with the family, so may it's for the couple it's around 16,000 rupees. और अगर आप फॉर द कपल 16,000 रुपीज, और अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इट इट रेंजेस अराउंड 14-15,000 रुपीज फॉर सिंगल फाइल. Somebody is saying very nice presentation. Thank you very much, sir. I cannot see your name, but I am very happy to see your comment. Mr. Dinesh Shah is asking, is the list of sightseeing same for Australia and New Zealand? Uh, Sir, I couldn't understand list of sightseeing बिकॉज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साइट सीइंग डिफरेंट है. बट मे बी आप कुछ कुछ अलग पूछना चाहते हैं और मैं कुछ अलग समझ रहा हूँ सर. दिनेश जी, कैन यू अगेन आस्क मी, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट यू वांट टू नो. दिनेश जी, एनी अदर पार्टिसिपेंट? वी आर वेरी हैप्पी टू इंटरेक्ट विथ एवरीवन. अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू नो एनीथिंग, आप प्लीज बताइए. What is the difference of sightseeing from? Okay, okay, Dinesh ji, I got your question. What is the difference of sightseeing from individual tour, individual Australia and New Zealand, from individual Australia and New Zealand? Sir, अगर आप ग्रुप में ट्रैवल करते हैं ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में, सो बट ऑब्वियसली जो साइट सीन है वो ज़्यादा कवर होता है, क्योंकि हम लोग जो पूरा टूर का जो आइटनरी प्लान करते हैं वो बहुत टाइमली प्लान होता है. तो हम लोग जितना कवर करते हैं इन द ग्रुप, मे बी यू विल बी नॉट एबल टू कवर ऑल दो साइट सीन इन सेम डेज. सो और उसका थोड़ा घूमने का भी डिफरेंट होता है. सो ऑस्ट्रेलिया में जो आप घूमते हैं, अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हैं तो उसमें वी यूजुअली गिव यू हॉप ऑन हॉप ऑफ बस पास. सो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस पास वो होता है जो सिटी में नॉर्मली सब बड़ी सिटीज में चलती है टूरिज्म की बस. तो उसका एक फिक्स रूट होता है जिसका 24 आवर्स का पास होता है, वो हम लोग आपको दे देते हैं. सो आप पूरा सिटी उसमें देख सकते हैं. ठीक है, और टिकट्स जो है हम अलग से ऐड करके दे देते हैं आप. सो जो ग्रुप में जो आप घूमते हैं दैट इज वेरी डिफरेंट, और इंडिविजुअल जो होता है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. दिनेश जी पूछ रहे हैं, कैन आई गेट आइटनरी बाय ईमेल? ऑफ कोर्स सर, वी विल सेंड यू आइटनरी ऑन योर ईमेल. वी हैव योर ईमेल. सो हम विल मेक श्योर कि हम आपको आइटनरी भेज दें ऑन द ईमेल सर.
Thank you, Dinesh ji. So I would like to say thank you everyone. आप लोग ने बहुत पेशेंटली ये पूरा वेबिनार प्रेजेंटेशन देखा, और आप लोग ने हमको बहुत एनकरेज किया है कि हम इन फ्यूचर भी इस तरह के वेबिनार इवेंट्स रखें फॉर अदर डेस्टिनेशंस आल्सो। और किसी को भी कुछ भी अगर जानना है, सो वी हैव अ वेबसाइट flamingotravels.co.in। वेबसाइट पे हमने सारी डिटेल्स रखी हुई है विथ द डेट्स एंड प्राइसेस एंड एवरीथिंग। सो बहुत डिटेल्ड वेबसाइट है। और अगर आपको कुछ इंक्वायरी है तो आप वेबसाइट पे दिए हुए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं, और हम वी वुड बी हैप्पी to take your inquiries ahead. So I would like to conclude the presentation and webinar here. Thank you very much, all of you. Yes, yeah, sorry, Ananya ji, आपका अभी just I got a message. Please send me itinerary. Yes, yes, Ananya ji, we'll send you the itineraries. Great. So thank you very much, everyone. Thank you for being patient. Hope to see you soon and get your bookings. Thank you. Good night, everyone.